Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, dear students, we are reading about the rulers of the Delhi, and our today's topic is a closer look administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. Tughlaqs और खलजीज या खलजीज और तुगलक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी कंसोलिडेशन के बारे में हम आज इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे. Well, dear friends, the consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. So this was a great step taken by the sultans to consolidate their administration. Dear students, slaves rather than sons. बादशाहों ने अपने बेटों के बजाय अपने इन स्लेव्स या गुलामों को ही प्रेफर क्यों किया अपनी इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए. ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. The sultans were advised a slave whom one has bought up and promoted must be looked after for its needs as a whole lifetime, and good luck to find a worthy and uh, experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. ये जो गुलाम होते थे इन बादशाहों के, ये बड़े वफादार होते थे. दे वेर very loyal to their masters. So the kings and sultans, they trusted them uh, for everything. That's why they preferred the slaves to their sons. The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients. जो इनके क्लाइंट्स थे या इनके जो गुलाम थे, उन लोगों को खलजीज और तुगलक्स ने रेज किया, उनको अपर पोजीशंस और हाई पोजीशंस पे उनको अपॉइंट किया. तो क्लाइंट का मतलब है समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और ए डिपेंडेंट. जो ये लोग ये क्लाइंट थे, बादशाहों के जो क्लाइंट थे, ये टोटली इन पे डिपेंडेंट होते थे. ये इन्हीं पे इनका मुनसर था सब कुछ. इनका जो था रहन सहन, ज़िंदगी का जो इनका आमदनी वगैरह सब ये इनकी बादशाह की मर्ज़ी से ही होता था और ये लोग बिल्कुल डिपेंडेंट होते थे उन पर. तो इसलिए ये वफादार रहते थे अपने बादशाहों के, अपने इन सुल्तानों के, मास्टर्स के. तो इसलिए जो सुल्तान था वो इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता था. तो इसी वजह से उन्होंने इनको अपर पोजीशंस और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंट किया. So they were raised to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. ये जो स्लेव्स थे और क्लाइंट्स थे, ये अपने मास्टर्स के बड़े लॉयल होते थे, बिल्कुल वफादार होते थे. लेकिन उसके बाद जो उनके वारिस होते थे, जो सुल्तान का वारिस होता था बाद में, उसके लिए ये वफादार, उतने वफादार और उतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते थे. तो इस तरह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
जो है वो आ गई इसमें, ये एक डिमेरिट था इसका। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, जो नया बादशाह बनता था उसके अपने सर्वेंट्स होते थे, उसके अपने बंदगान होते थे, अपने क्लाइंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट द accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low base born to high offices. एक और वजह थी इसका, जो एक और डिमेरिट था, जो एलीट क्लास था, जो बड़े लोग थे, असर और रसूख वाले लोग थे, वो इससे नाखुश थे। वो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ थे कि ये जो गुलाम थे, गुलामों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पर, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया जाए, और ये जो बड़े बड़े लोग थे उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाए। तो इससे वो नाखुश थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनकी नज़र में छोटे लोग हैं या बेसबॉर्न पीपल हैं, गुलाम हैं, उनको हाई ऑफिस में अपॉइंट किया जाए। तो इस चीज़ से वो नाखुश थे। और ये जो तवारीख लिखने वाले थे उन्होंने भी बादशाहों की इस बारे में क्रिटिसाइज की थी। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इस बारे में ज़रा एक छोटा सा नोट है यहाँ पे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो गुजरा है, he appointed अजीज कुमार a wine distiller, Feroz Hajam a barber, Manka Tabbakh a cook, and two gardeners, Ladha and Pira, to high administrative posts. Ziauddin Barni, a mid 14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. तो ये जो ज़ियाउद्दीन बर्नी है, ये क्रॉनिकलर है, हिस्टोरियन है। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की इस बात पे क्रिटिसाइज़ की है कि इसने इन ऐसे लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंट किया था, क्योंकि ये लोग जो थे ये उन ओहदों के लिए पॉलिटिकली मौजूद नहीं थे। इनका इतना इंसाइट नहीं था, इनका इतना इल्म नहीं था, इनकी इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये उन पोजीशंस को होल्ड कर सकें, उन पोजीशंस को, उन ओहदों पे जो जिम्मेदारियां थी उसको अच्छी तरह से निभा सकें। तो ये जो ज़ियाउद्दीन बर्नी है, इसने बादशाह की इनकैपेसिटी टू रूल इसको टर्म किया है कि ये बादशाह जो था वो एक नाकाबिल था, इस सिलसिले में वो एक अच्छा रूलर नहीं था। Likewise, the earlier sultans, the Khaljis and Tughlaqs, they appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta, and their holder was called Iqtadar or Mukti. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their ektas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments and salary as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions to service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. So, this is about the administration of the Khaljis, and we will be discussing some more
important things. That is, as the Delhi Sultanate and Delhi Sultans brought in hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats, and rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of the land revenue under its own control. उन्होंने लैंड जो थी उसकी असेसमेंट की और उसकी जो कलेक्शन होती थी रेवेन्यू की उसका जो इंतज़ाम था वो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, अपने अंडर ले लिया और उसको एसेस किया. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. The Sultan's administrators measured the land and kept careful amounts. Kept careful accounts. ये जो सुल्तान के आदमी थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने लैंड को मेजर किया, एग्रीकल्चरल लैंड को, और उससे कितना रेवेन्यू आ सकता था, हासिल किया जा सकता था, उसका उन्होंने बाज़ाब्ता एक अकाउंट रखा, हिसाब किया, खाता बनाया. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were three types of taxes. Number one, on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasant's produce. Number two, on cattle, and number three, on houses. तो ये तीन किस्म के जो टैक्स थे वो लगाए गए थे सुल्तान के द्वारा. It's important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic plains, uh, there were forested areas that sultans and the Sultanate force could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. तो ये इन सुल्तान्स की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आज डिस्कस किए. आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आप समराइज़ करेंगे, फिर अपनी इन नोटबुक्स में इनको दर्ज करेंगे. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको एक एलाबोरेट नोट जो है वो डिक्टेट करेंगे और वो आपको बताएंगे. So today we conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.